Today we are going to talk about trademark law. Trademarks are basically unique symbols, words, or marks which are used to represent a business or its goods or services. अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो आप सबने HP which is used for laptops and there is this HP which is in caps is used for Hindustan Petroleum. तो आप देख सकते हैं कि जो सेम वर्ड्स हैं दैट कुड बी यूज एज ट्रेडमार्क्स फॉर डिफरेंट ब्रांड्स बट इट्स द वे दे आर यूज्ड, हाउ दे आर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड दैट डिटरमाइंस कि वो किस ब्रांड के ट्रेडमार्क है. सिमिलरली द वर्ड एच, दिस अल्फाबेट एच इज यूज्ड फॉर बोथ Hyundai एंड Honda. If you look at their symbols, this is for Honda and this one is for Hyundai. So Hyundai symbol is in italics. That's how it is differentiated from the Honda symbol. Next is importance of trademarks. Trademarks basically ये चार key functions करते हैं. First is identification. They help us to identify कि कौन सा product किस brand का है. If we take Nestle, so Nestle is the brand. और इसके different products हैं जिसमें सबसे famous Maggi, you must all know. तो मैगी के पैकेट पे there is a trademark of Nestle through which we can be assured कि उसकी क्वालिटी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की होगी. So it helps in quality assurance. It helps us in source indication. Nestle के ब्रांड के थ्रू we can know कि that Maggi belongs to Nestle. Then it helps in advertising. So Nestle advertises Maggi through its brand. So trademarks basically helps us to prevent misuse and confusion. तो जो different noodles के brand आते हैं, they cannot use Nestle on their packets. So this avoids confusion. Then second, it helps protect brand's identity and consumer trust. Now let's see the evolution of trademarks law in India. So the first legislation in India was called Indian Merchandise Marks Act of 1889. After that, Trademarks Act of 1940 was enacted, which was followed by Trade and Merchandise Act of 1958. Later on, when the TRIPS agreement was signed by India, India implemented the Trademarks Act of 1999 to incorporate the provisions of the TRIPS agreement and to bring it in line with the international legislation. Let's look at the Trademarks Act of 1999. So this act, it extends to the whole of India. It came into force on 15 September 2003. If you look at the object of this act, it says, an act to amend and consolidate the law relating to trademarks to provide for registration and better protection of trademarks for goods and services and for the prevention of the use of fraudulent marks. तो इस एक्ट के बाद ही जो ट्रेडमार्क्स थे वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए रजिस्टर होने लगे. अब हम देखेंगे ट्रेडमार्क की डेफिनेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1999. So it is defined under section 2 clause ZB. It says trademark means a mark capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing the goods and services of one person from those of others and may include shape of goods, their packaging and combination of colors. So according to this definition, if we see the essentials of a trademark, so first it says it should be a mark, means a mark. Then secondly, it says that it should be capable of being graphically represented. So it must be representable on a paper or digitally. And third is distinctiveness. It should be able to distinguish goods or services from one to those of others.
Next is categories of trademarks. So basically, trademarks could be categorized into two. So first is the conventional trademarks, that could be words, logos, symbols, like we discussed, HP, Colgate. For symbol example is Nike swoosh. So this Nike swoosh is a symbol and it is registered as a trademark. नेक्स्ट आर नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स. तो जैसा कि ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है, विच आर नॉन कन्वेंशनल. दे आर नॉट सिंपल वर्ड्स और सिंबल्स, दे आर स्मेल, साउंड, hologram, colors, which are difficult to get registered. Non-conventional trademarks or non-traditional trademarks, we can say, are difficult to register क्योंकि इन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता है. तो द ट्रेडमार्क रूल्स ऑफ 2017 दे प्रोवाइड सम क्लैरिटी इन दिस रिगार्ड. अगर हम स्मेल की बात करें तो इट इज़ रेयरली रजिस्टर्ड. जैसे क्योंकि उसका एक कंडीशन है, इफ़ यू वांट टू रजिस्टर अ स्मेल एज अ ट्रेडमार्क, तो जो स्मेल है इट हैज़ टू बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द प्रोडक्ट इटसेल्फ. अगर हम स्टारबक्स की कॉफ़ी की बात करें तो जो उस कॉफ़ी की स्मेल है इट इज़ सिमिलर टू द प्रोडक्ट, इट इज़ द कॉफ़ी स्मेल. तो वो स्मेल आप रजिस्टर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द प्रोडक्ट. सिमिलरली ऐसे एक शनैल नंबर 5, इट्स अ परफ्यूम ब्रांड. इसका एक परफ्यूम आया था विच वॉज नॉट गिवन रजिस्ट्रेशन क्योंकि जो इसका स्मेल था इट वॉज नॉट डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द प्रोडक्ट. बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे स्मेल को एज अ ट्रेडमार्क ग्रांट किया गया है. वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल इज अ डच टेनिस बॉल. तो बेसिकली ये जो बॉल थी इट स्मेल्ड ऑफ ग्रासेस, इट स्मेल्ड लाइक ग्रास. तो क्योंकि ये जो स्मेल है इट वॉज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट विच वॉज अ टेनिस बॉल, तो इसलिए इसको स्मेल एज अ ट्रेडमार्क ग्रांट किया गया था. Similarly, there were a brand called Sumitomo. A brand called Sumitomo, जिनके टायर्स थे. It smelled of roses, which is obviously distinct from the product itself. और इसलिए यहाँ भी इनको smell as a trademark grant किया गया था. Next, we'll see sound. So, sound as a trademark has been granted in some cases. Uh, you must have heard of Yahoo's Yodel and MGM's Lion Roar. So, these have been granted as sound trademarks. And ICICI's Jingle, that is also a sound trademark. Next is color. So, color as a trademark is also difficult to register. For example, Cadbury's Purple. It was denied because it's a single color. So some just one brand cannot have trademark on a particular color. So it's difficult to register if there is just one color. Combination of colors can be easily registered, but a single color is difficult to register. Next is hologram marks. So hologram marks, it is basically a photographic technique which records the scattered light from an object and presents it in a 3D format. तो अगर आप डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो वो आपको वो होलोग्राम मार्क दिखाई देगा. फॉर एग्जाम्पल यूएसए में देयर इज अ कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस, सो इट हैज़ रजिस्टर्ड इट्स होलोग्राम. सिमिलरली क्रेडिट कार्ड्स पे इस तरह की होलोग्राम इमेजेस होती हैं. एंड इफ यू लुक एट करेंसी नोट्स, लाइक कंसिडर दिस 200 रुपीज़ नोट, so there is this hologram. This is a security hologram in the middle. This green line that you see, this is a security hologram. Unfortunately, अभी इंडिया में ऐसा कोई hologram registered नहीं है. But since you have seen the application, it is important to register such holograms too. So these were a few types of non-conventional or non-traditional trademarks: smell, sound, color, holograms. Next, we'll discuss well-known trademarks. So, well-known trademarks have been defined under Section 2, Subclause 1
ZG. Let's see what are well-known trademarks. So it says that well-known trademarks in relation to any goods or services means a mark which has become so to the substantial segment of the public which uses such goods or receives such services that the use of such mark in relation to other goods or services would be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade or rendering of services between those marks or services and the person using the mark in relation to the first mentioned goods or services. तो जो वेल नोन ट्रेडमार्क्स है वो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं एंड दे आर प्रोटेक्टेड अक्रॉस ऑल द क्लासेस. ये जो क्लासेस हैं देर आर अराउंड 1 to 45 classes of goods and services under the NICE agreement. So in India, when we register a trademark, we have to classify the goods that to which class they belong to. So 1 to 34 are the goods and the rest 35 to 45 are services. तो जो वेल नोन ट्रेडमार्क्स होते हैं जैसे सैमसंग, LG, रिलायंस, if they are well known even in one category, even in one class, then they will be given protection in all the classes. क्योंकि लोग इनके ट्रेडमार्क्स का मिसयूज कर सकते हैं. अगर हम रिलायंस का एग्जांपल लें तो रिलायंस डील्स विद डिफरेंट सेक्टर्स एंड सर्विसेज. तो अगर कोई इन्फ्रिंजर रिलायंस का नाम यूज़ करके अपने गुड्स को बेचे तो इट इज़ पासिंग ऑफ ऑन द गुडविल ऑफ रिलायंस. तो ऐसे लोगों को ऐसी लीगल इन्फ्रिंजमेंट ना हो उसके लिए वेल नोन ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्शन दी गई है अंडर द एक्ट. द प्रोटेक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 2 and section 11 clause 6 to 9 and under rule 124 of the trademark rules 2017. इस रूल के अंदर रजिस्ट्रार देखता है कि कौन से ट्रेडमार्क्स वेल नोन ट्रेडमार्क्स हैं and the factors which need to be considered are given under section 11 clause 6 to 9. Types of trademarks. Trademarks when they are used for goods. आपने देखा होगा कई ट्रेडमार्क्स के आगे ऐसे TM लिखा होता है in a circle. There would be a brand और उसके आगे इस तरह TM लिखा होता है. This means कि उस बिजनेस ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रखा है फॉर द रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी वो ट्रेडमार्क ग्रांट नहीं हुआ है, तो दे यूज दिस सिंबल. देन सेकंड आर सर्विस मार्क्स विच आर यूज फॉर सर्विसेज. तो अगर किसी बिजनेस के नाम के आगे आपको ऐसे SM लिखा मिले, SM इन अ सर्कल, दिस मीन्स उन्होंने सर्विस मार्क के लिए अप्लाई कर रखा है. अभी हमने देखा था कि अंडर द नाइस एग्रीमेंट देयर आर 45 क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर उन्होंने 1 से 34 के बीच में अप्लाई किया है तो दे विल यूज TM, और अगर 35 से 45 के बीच में अप्लाई किया है विच आर द सर्विसेज तो दे विल यूज SM मार्क. एंड वंस दैट रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम they would use R. This means that the trademark has been registered under the act. Next are certification marks. These are defined under section 2 clause 1 subclause E. They are used to certify quality of a good or services. Let's look at the definition. So it means a mark capable of distinguishing the goods or services in connection with which it is used in the course of trade, which are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods, or performance of services, quality, accuracy, or other characteristics from goods and services not so certified and registrable as such under the chapter 9 in respect of these goods or services in the name as proprietor of the certification trademark of that person. जैसे आप देख सकते हैं they are used to certify
द क्वालिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके एग्जाम्पल है लाइक ISI मार्क, एग मार्क, वूल मार्क। जहाँ पे इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन मार्क लगा होगा तो कस्टमर कैन बी एश्योर्ड कि ये प्रोडक्ट एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मीट करता है, एक सर्टेन क्वालिटी को मीट करता है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव मार्क्स। सेक्शन 2(1) clause G defines collective marks. It is basically used by members of an association. Let's see the definition. It means a trademark distinguishing the goods or services of members of an association of persons, not being a partnership within the meaning of the Indian Partnership Act, which is the proprietor of the mark from those of others. तो अगर किसी एसोसिएशन के कुछ लोग मेंबर्स हैं तो वो इस तरह का एक कलेक्टिव मार्क ले सकते हैं एंड दे कैन ऑल यूज दैट मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स टू सेल देयर गुड्स. So these were the types of trademarks which are registered under the Trademarks Act of 1999.